फार्मा में आज का पॉइंट्स है सेफ्टी डेटा सीट यानी एसडीएस से। आपने एसडीएस या एमएसडीएस का नाम सुना ही होगा। द टर्म एमएसडीएस यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट and SDS यानी Safety Data Sheet refers to similar document, but there are key differences mainly related to the format and the regulation updates से। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो MSDS is an old and inconsistent format, whereas the SDS यानी Safety Data Sheet is new, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्लोबली हार्मोनाइज्ड डॉक्यूमेंट है। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यूएस, an SDS is a written or printed material that describe the physical and chemical properties of a hazardous chemical and provide information on health effect, protective measure and safety precaution। दूसरे शब्दों में कहें तो सेफ्टी डेटा शीट एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो इंश्योर करता है कि केमिकल का यूज, हैंडलिंग और डिस्पोजल सेफ तरीके से हो ताकि वर्कर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर और बाकी लोग सुरक्षित रहें। Now coming to the requirement of SDSA. Legally, SDS is mandatory only for the hazardous chemical, but in practice or in real world situation, the SDS is often required even for non-hazardous material due to export-import requirement, customers or distributors demand, internal documentation and quality assurance or regulatory compliance है। Now coming to the contents of SDSA, एक SDS में टोटल 16 sections होते हैं। The number one is identification of the material. The second section is hazard identification, and the third is composition or information on the ingredient। The fourth one is first aid measure, and the fifth is firefighting measure. The sixth is accidental release matter, and the seventh is handling and storage. The eighth is exposure control and personal protection, and the ninth is physical and chemical properties. The 10th is stability and reactivity. The 11th is toxicological information. The 12th is ecological information. The 13th is disposal consideration. The 14th is transport information. The 15th is regulatory information. And the 16th is other information।